This is the topic evaluation of double integral by changing into polar coordinates. You all know about polar coordinates. I taught you in last session. Good morning, good afternoon, Tabish. I taught you in last session how to integrate using polar coordinates. Polar coordinates are nothing, but they are actually r theta coordinates. Right? Please listen very carefully. R is the distance of any point on r theta plane. First, make sure that you are standing on r theta plane. There are two kinds of planes actually when you deal with the two-dimensional planes. One is the usual xy plane. You call it r2 plane, capital R and power 2, right? R2 plane, xy plane, which we generally study, right? And where the limits are of x and y, of course. And you know how to find the limits of x and y when you deal with xy plane. Either you make a horizontal strip or you make a vertical strip. That depends on the problem actually. What kind of strip is suitable for that particular problem. We have seen that in many problems we can easily take both the kind of strips. Either we take a horizontal or vertical strip, the problem can be solved easily. But in some type of problems we have seen that vertical strip doesn't work but horizontal works, and in some problems horizontal works but vertical doesn't. It depends on problem, right? And that's uh, why we studied change of order of integration. So changing of order of integration is just due to the restriction we face while integration with respect to a particular variable first, right? And sometimes we face trouble in integrating with respect to y first, but we at the same time we see that integration with respect to x is relatively easy, so we just change the order of integration, and the situation can be just of opposite nature, that integration with respect to y may be easy and x may be difficult, but at least there is a hope that the integration with respect to one of the variable is easy, and then we can use that change of order of integration that we studied in last few lectures. But now sometimes I was no problem सोनू सिंह, I will just repeat everything, but मैं बातों ही बातों में दोबारा कह दूंगा, राइट? दोबारा पीछे जाके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बातों में वो बात दोबारा आ जाएगी, डोंट वरी. ओके. अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आप इतने मुश्किल में पड़ जाएंगे कि ना तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान होगा ना y के रिस्पेक्ट में आसान होगा पहला इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है. डबल इंटीग्रेशन में जो पहली दफा आप इंटीग्रेशन करते हैं वो उस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, आपके आपके टेक्निक उस पर डिपेंड कर रही है. अगर फर्ज कीजिए कि आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं जबकि अंदरूनी लिमिट्स y की ही दी हैं, तो आपको मजबूरी में हार के आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान भी तो हो. यानी एक रास्ते से दूसरा रास्ता आपको तभी अपनाना होता है जब दूसरे रास्ते में कुछ आपको उम्मीद नजर आए, राइट? तो तभी आप चेंज ऑफ ऑर्डर लगाते थे. लेकिन कभी कभी क्या होगा, जब दोनों रास्ते बंद होंगे, ना तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान होगा ना y के रिस्पेक्ट में आसान होगा. तो जो इंटीग्रेंट है, यानी जो एक कैपिटल एफ एक्स वाई है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसे इंटीग्रेंट कहते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट? तो कभी कभी ये ऐसा हो सकता है कि ना तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान हो ना y के रिस्पेक्ट में आसान हो. Then we have to look for some other technique, and that technique is called changing into polar coordinates, right? We have to move on to the new plane, r theta plane, from the original xy plane, so that the problem can be solved easily, right? And this is just one of the way to evaluate the integral. I'm not saying that this is the sure short way that every time this method will succeed. No, this method doesn't succeed every time. It depends on the problem, right? And at the moment I can say that the functions f x y, which are kind of symmetrical functions in x and y. I hope you know about symmetrical functions in two variables. A symmetric function is two variables is a function of the form where if you replace or if you interchange x and y, you again get the same function. I mean, f of x comma y is equal to f of y comma x. You see this is a function of x and y, and if you interchange these two variables, I mean, if you replace x by y and y by x, then that will be a new function, capital F y comma x. And if fx comma y is equal to fy comma x, or you can say that if interchanging the variables x and y doesn't change the integrand actually,
then that function is called symmetrical function, right? Suppose I give you a function of this form. See, consider a function of this form f. I'm writing it here. Fx comma y is equal to xy upon x square plus y square. You can see that this function is symmetrical in x and y. By symmetry, I mean that if you interchange x and y with each other, then again you will be having the same function. If I interchange it, if I write fy comma x, then that will be something like yx upon y square plus x square, right? And of course, these two are identical to each other, right? So such functions, the presence of such functions as integrand, right, uh, gives you hope that the integral can be evaluated by changing into polar coordinates. Then you have to go for the polar coordinates. You can see that this function is equally difficult to integrate with respect to y as it is with respect to x, due to the symmetry in x and y. जितना मुश्किल ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल उतना ही मुश्किल ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि सिमेट्री है इसमें, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि दोनों ही रास्ते मुश्किल है, ना x के रिस्पेक्ट में आसान है ना y के रिस्पेक्ट में आसान है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको उम्मीद नजर आएगी कि पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके क्वेश्चन हो जाएगा. आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट the sure short method which works every time, but in certain kind of problems it works well, right? और वो आपके ऊपर है कि आप पहचानते कैसे हैं. आपको खुद से पहचानना है कि किन प्रॉब्लम्स में चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स काम कर सकता है, राइट? ये आपके ऊपर है बिल्कुल. खैर, वो अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप अभी यूज्ड हो जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि किस में लगना है किस में नहीं लगना है. ठीक है. Now see the method. What is the method? This is the integral capital I. See the double integral capital I denoted by letter capital I, and double integration capital R is the region. It may be bounded or unbounded. Where actually you are going to integrate this function, the function of two variables, f x y dx dy. Suppose this function is difficult to integrate with x as well as with respect to y, right? And somehow you identified that changing into polar coordinates may work, right? Then you will proceed as this, right? So put x is equal to r cos theta and y equal to r sin theta. We discussed it in last lecture. These are the transformations which actually transforms the variables x and y into the two new variables r and theta, right? So these are the equations which are related to which are relating actually the Cartesian coordinates xy to the polar coordinates r theta. And I have just drawn a picture there. If you remember this is a picture, this is a picture, and this is responsible for this transformation by using the trigonometry here in these two triangles. You can see that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and the problem of xy plane goes into r theta plane, right? Where this axis is called initial line and this vertical axis is called the pole. They are denoted by theta equal to 0 and theta equal to pi by 2. There are no more x and y axes here. X and y are completely avoided here. You are now in r theta plane. Forget about x and y. Just write r and theta. R is nothing, but it is the distance of the point P from the origin. See, originally the point was P x comma y in Cartesian plane, xy plane, right? But now the problem has been transformed into a new plane. This is the r theta plane, where this is theta equal to 0, this is theta equal to pi by 2. If you extend this line backwards like this, this will be theta equal to pi. If you extend this line like this, then this will be theta equal to minus pi by 2 or theta equal to 3 pi by 2. It depends what angle you choose. And then this point P, which was originally x comma y, this coordinate was x comma y, but now the coordinate will be r comma theta, where r is the distance of this point P from origin O, right? Let me write capital O here for origin, right? Okay, and theta is this angle. This is the angle theta, and it is always measured anti-clockwise. You can see this arrow, right? It is measured anti-clockwise, starting from the initial line. So these are the new coordinates of the same point, but with a different axis and with the different coordinates. Originally, the coordinates were x comma y. Now the coordinates are r comma theta, right? So this is just a new way to represent the same point, but on a new plane, right? And this is possible
due to this substitution, if you put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and why specifically this x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, that comes from this triangle. If you apply sin theta here, then that gives you a y upon r, then you will get y equal to r sin theta. And similarly, if you apply cos theta in this triangle, then you will get x equal to r cos theta. So this is basically the foundation of these two transformation, why these are so important, right? Now we'll come to the current topic here, right? So you have to use these two transformations in order to switch on to the new r theta plane from the original xy plane, right? Okay, now since I said earlier that whenever you transform from one plane to another, or more generally from one space to another space, suppose you are going to transform yourself from earth uh, to Jupiter, right? These are two planets, right? There will be, of course, the problem will be completely shifted from Earth to Jupiter, but there will be a change in certain parameters, like change in area, change in volume, or change in some geometrical um, quantity, what I can say. That is actually balanced by this Jacobian, right? So that is why Jacobian is important. You have studied Jacobian, but the geometrical aspect of Jacobian is that the Jacobian determinant is actually the ratio of two areas. This is the original area dx dy, elementary area dx dy, and this is the elementary area in r theta plane. So Jacobian determinant represents the ratio of change in area or change in volume also. Of course, volume if you are dealing in R3 or three-dimensional space, right? Since we are dealing with a double integral, so here the Jacobian determinant will be equal to the ratio of change in area. Whenever we study triple integral, in that case, Jacobian determinant will be equal to the ratio of change in volumes, right? So if you increase the dimension, then this this geometrical entity, right, will increase its dimension also. I mean, area becomes volume, like length becomes area, then area becomes volume as you move from one dimension on three dimensions. In one dimension, it is dx upon dy. You remember that substitution method. You all have used substitution method in +2, where you replace x equal to t square, or this kind of substitution where you replace x by t, new variable t, then you always replace dx by some ft, right? And that is also a kind of a change in elementary length. Dx is the elementary length, right? Dx dy is the elementary area. Dx dy dz is the elementary volume, right? So if you are transforming your problem from one space to another space, no matter what is the dimension of a space, whether it's one dimension like you did in +2, whether it's two dimension like you are studying now, and it may be three dimension, you will study in next few lectures three dimensions also, right? Jacobian determinant is always there, right? Here it will be determinant of Jacobian is equal to the ratio of the areas of two spaces. This is the numerator is having the area of the elementary area in xy space, and the denominator is the elementary area in r theta space. Okay, so now cross multiplying it, you will get dx dy is equal to determinant of j dr d theta, right? So now I can use this, and of course you all, everyone can find this Jacobian. You know how to evaluate the Jacobian. See, the Jacobian of xy with respect to r theta is this, right? And you know how to evaluate this 2 cross 2 determinant, and you find del x by del r, you differentiate it with respect to r, you're getting cos theta. Then del x by del theta will be minus r sin theta, and del x by del y by del r, and then del y by del theta, and then you will evaluate this and you will get it r, right? And note that this r can never be equal to 0, and it can never be negative, right? This is very important, and it indicates that this problem, this transformation, when you're actually transforming your problem from xy plane to r theta plane by using a function. This is a kind of function. I mean, x and y are depending on r and theta, and that function is an invertible function because
the determinant of that Jacobian is a non-zero value. So that's why this transformation will always work. Only those functions work which are invertible, right? Are you getting my point? You're taking your problem from xy plane to r theta plane, but originally you have to answer your problem in xy plane, right? So you have to come back to the xy plane, and in order to come back to the xy plane, you need a function which is invertible, and this Jacobian determinant is a non-zero value that guarantees that this function is an invertible. This transformation is an invertible transformation. It means that you can comfortably use this kind of transformation or substitution in order to solve your problem without facing any error, right? Okay, so this r is not equal to 0. This is a good thing. You should not have Jacobian is equal to 0, right? Okay. Now you see that this was your original integral, and now x and y have been replaced by r cos theta and r sin theta, right? And dx dy is replaced by Jacobian determinant into dr d theta, right? And now you can comfortably put the value of Jacobian determinant, that is equal to r, right? And of course now you will be using the limits of r and theta because you are transformed into r theta plane. So the inner limits are always reserved for r, as I told you in last lecture, and the outer limits are reserved for theta only because theta is always a constant. So that's why they always find the place in the outer integral. The inner integral limits are from r equal to f1 theta to r equal to f2 theta. Okay, so we all know how to solve an integral in polar coordinates. We'll see that in next example, right? So this is the basic theory. You just want to shift your problem from xy plane to r theta plane, and that is done with a purpose. This is not just for fun that you are going to another plane, right? This is not just for fun. This is just to evaluate the integral. This is just for the purpose, right? If we are unable to integrate with respect to x or with respect to y, or we can say that the integral is difficult to integrate with any of the variable, with either variable, with first, then you have to go to this method, changing into polar coordinates, and it may or may not work. It will work 99% of times when the function is symmetric in x and y, right? Okay, so let's move to example number 1. You can see that this is an integral, double integral, and r is the region. You can see that this is the region. This is the interior of a circle of radius a. This is a circle centered at 0 0 with radius a, right? And since this symbol is less than or equal to, you can see that this symbol, so it represents the interior of the circle, right? And here's another circle but with radius b. Of course b is less than a, given that, right? And this represents the exterior of the circle because the symbol is greater than or equal to, right? So basically when we will draw this, we'll see that there's an annular region between two concentric circles because they both are having center at 0 0. Yes, Gaurav, you are saying something? फंक्शन सिमेट्रिक इन x एंड y, सर ये कैसे आप कह रहे हैं? मतलब अगर आप y को x और x को y रखें इसमें तो लौट के वहीं पहुंच जाएंगे जो था. कुछ बदलाव होगा क्या इसमें? नो सर. हाँ, तो इसी को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन. इसी को कहते हैं, जैसे सिमेट्रिक कर्व्स आपने पढ़े होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है. ये अपने आप में कर्व है, ये फंक्शन तो नहीं है पर कर्व है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर. क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन, क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है? अगर एक्स को वाई और वाई को सॉरी सिमेट्रिक कर्व है, एक्स को वाई और वाई को एक्स रखें तो है, ठीक है. लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है ये, क्या ये भी सिमेट्रिकल है? नो सर. नहीं, ये सिमेट्रिक है, ये नहीं है ना. एक्स को वाई, वाई को रखेंगे तो नया वाला पैराबोला आ जाएगा, वही थोड़ी आएगा, फर्क आ जाएगा ना, डिफरेंट पैराबोला आ जाएगा. क्यों? हाँ, तो सिमेट्रिक उसे कहते हैं. सिमेट्रिक का मतलब है, जैसे हम मानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होती हैं. जैसे स्क्वायर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, आप जानते हैं. उसमें कई सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं. डायगोनल से भी आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, या बीचों बीच मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें अपोजिट साइड्स के, तो भी सिमेट्री होती है. तो सिमेट्री का मतलब है जिसमें कोई बदलाव ना आए, लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसा हो जाए, या उनको स्विच कर दें तो वापस वही आ जाए. सिमेट्री का मतलब ये है. खैर, इस फंक्शन को अगर आप देखें, हाँ ठीक है गौरव, इस इंटीग्रेंड को अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आसान है या विद रिस्पेक्ट टू x आसान है, किसके के रिस्पेक्ट में आसान है, या यूं कहिए कि दोनों के रिस्पेक्ट में बराबर मुश्किल है? दोनों के रिस्पेक्ट में बराबर है सर. बराबर मुश्किल. अगर मैं आपसे कहूं कि इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो चलिए इसको आप कांस्टेंट मान लेंगे
इसको भी कांस्टेंट मान लेंगे, लेकिन ऊपर भी वाई स्क्वायर है, नीचे भी वाई स्क्वायर है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा। यूजुअल जो टेक्निक्स हमने पढ़ी, कोई फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ये वाई स्क्वायर ना होता यहाँ पे, तब तो शायद आप इसको कर लेते, तब आप शायद इसका tan इनवर्स y अपॉन x हो जाता है, y अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन x, यस और नो? अगर ये वाई स्क्वायर ना होता ऊपर तो, लेकिन क्योंकि दोनों Yes. वेरिएबल हैं ऊपर, तो ये दोनों की रिस्पेक्ट में मुश्किल ही लग रहा है, तो हमें अब थक हार के हमें अब इस टेक्निक पे जाना पड़ेगा, राइट? तो टेक्निक में जाने से पहले हमें पिक्चर भी बनानी पड़ेगी, और पहले मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, और ये नोट सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये नोट सबके लिए है, सारे क्वेश्चंस के लिए नोट। और नोट ये है कि इंटीग्रेशन of the integrand is x square y square upon x square plus y square is difficult with respect to either variable x or y फर्स्ट। तो दोनों की रिस्पेक्ट में ही मुश्किल है, तो इसीलिए अब आपको लग गया कि चेंज ऑफ ऑर्डर लगाने का कोई फायदा नहीं, यू हैव टू यूज चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फंक्शन आपको सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, राइट? ओके, now we'll draw the picture first, right? So draw bigger y-axis like this, and this is x-axis, right? And we'll have to make two circles actually, right? So first is the smaller circle, right, centered at 0 0, and radius is equal to b, right? So b is smaller of a and b. This is circle with radius b. Now we'll make a bigger circle. Now it's fine. Okay, now you can see that this is this one, the inner one, this one, this is the circle, inner circle with radius a, and this one is the circle with radius b. Sorry, the inner is of radius b and the outer circle is of radius a, right? And see that they're saying that the interior of the bigger circle and the exterior of the smaller circle is actually this region, right? Transformation which will take this problem onto r theta plane, and those transformations are x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and then determinant of Jacobian comes out to be little r, as we the transformation used is let x equal to r cos theta, sorry, let x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, right? And we know that dx dy in the original problem is replaced by the Jacobian determinant multiplied with dr d theta, and that comes out to be r dr d theta, right? So you have to use it directly. Okay, then, and of course, in order to find the limits of r and theta, you have to draw a strip, and that strip is actually radial in nature, or you can say that like this, right? And this is the portion of the strip which is falling inside this colored region, right? You can see that as a portion of the strip. I will ask a question to Sonu. Sonu. Yes, sir. Where is the base of the strip? You can see that this is the base of the strip. The base of the strip is lying where? See, this is lying on what? What is the curve? Inner circle? Yes, sir. B. B. So should I write it R is equal to B? Because this is a standard equation of circle centered at 0 0 and radius equal to B. I have taught you in last class, right? Yes, sir. And see the head of the strip. R is equal to A. This is below R is equal to A. Now, will please tell me the angle which you should trace with this strip.
in order to cover this whole yellow colored region, So 0 you to know 2 that pi. 0 to 2 pi. Of course, you have to rotate this strip all the way through this region till this point. You have to start from here 0. I mean, you will start this strip from at this point, and then it will go all the way like this, and then you will stop it here. Then you can see that the angle covered will be 2 pi. If you want to trace this full annular region, that is just the region between two concentric circles. Are you getting my point? Yes, Right. sir. So but before that, actually, some students may wonder that how I achieve this r equal to a. This is also this can also be obtained from here. See, observe now. The inner circle is x square plus y square equal to b square, right? If you somehow you forget this equation of circle in polar coordinate, because nobody can remember everything. So you are just putting x equal to r cos theta and r sin theta here. You see that this will give you r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to b square, right? And you can see that you can always take common r square, and you will be getting r square is equal to b square, because cos square theta plus sin square theta equal to 1. And then you will take a square root, so r is equal to plus minus b. Am I correct? Right. Now, Sonu, what is r? R होता क्या है एक्चुअली में? क्या चीज है r? Sir, R r radius. डिस्टेंस होता है, अभी बताया। हाँ, रेडियस होता है। क्या रेडियस कभी नेगेटिव होता है? नहीं सर। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस कभी जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसीलिए आपने नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दिया। नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड, राइट? तो r की वैल्यू कितनी आ गई है? B. b, राइट? इग्नोर्ड, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि जो अंदर वाला, हाँ, अंदर वाला जो सर्कल है वो दरअसल r इक्वल टू b है। तो अगर आप भूल गए तो आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, राइट? और सिमिलरली r इक्वल टू a भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसमें? जिन बच्चों को ये पोलर इक्वेशन याद नहीं है, मान लीजिए, तो कोई इशू नहीं है, आप वो सब्स्टिट्यूशन सर्कल की इक्वेशन में रख के अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर में। सिमिलरली r इक्वल टू a, आप r इक्वल टू a भी आपको मिल सकता है। सेम प्रोसेस जो मैंने ये किया, राइट? Okay, now we'll find the limits of r and theta, and I will write those limits here actually near the diagram only, जिससे कि clear रहे आप लोगों को। See, I'm writing here the limits of r and theta. Okay, so limits of r, you can see that the base of the strip, this is the base of the strip, this one is the base of the strip, it is resting on the curve r equal to b, and the head of the strip is lying below r equal to a, right? And in order to trace this yellow colored region, you have to rotate this strip from 0 to 360 degree, and that is 2 pi. Do not use सर हम 0 to pi degree, by 2 क्यों ले right? रहे हैं? आपको पूरा येलो रीजन चाहिए या सिर्फ फर्स्ट पार्ट का चाहिए? सर वो तो फर्स्ट हम बाद में क्वाड्रेंट का 40 चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे ना। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, इस उम्र में ये धोखा हो जाता है कि 4 से मल्टीप्लाई करते नहीं। यू आर नॉट फाइंडिंग एरिया, ये एरिया नहीं निकाल रहे आप। जिस दिन हम एरिया निकालेंगे उस दिन ये काम करना। क्या आप एरिया निकाल रहे हैं? क्या मैंने ऐसे कहा है कि एरिया होता है? नहीं सर। हाँ, तो जब तक मैं एरिया या वॉल्यूम ना कहूं तब तक सिमेट्री मत यूज करिए। सिमेट्री का मतलब ये होता है ना कि एक पार्ट का एरिया निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एरिया के लिए होता है, ये फंक्शन के लिए वो जरूरी नहीं है। जब तक ये फंक्शन यहाँ बैठा है तब तक गलती से भी असर ना करे। जिस दिन ये नहीं होगा ना यहाँ पे, उस दिन ये एरिया होगा, तो उस दिन हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, चलिए तो बताइए। Therefore, I will be equal to, please pay attention, outer limits are always reserved for theta. So theta is starting from 0 and ending at 2 pi, and r is starting from b and ending at a. And now see the function. This is a function x square y square. So if you put x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, that gives you r to the power 4 cos square theta sin square theta, and divided by this is x square plus y square, that gives you r square, and dx dy is r dr d theta. And now that cancels this r square with the r to the power 5, and that gives you r cube, I think, r cube, and cos square theta sin square
theta dr d theta. And now the good thing is that all the limits of r and theta are constants. All four limits are constant, and this is very important if you want to use a shortcut method. But that works if and only if all the four limits are constant. So I will use that shortcut method. I'll just separate these functions like this, r cube multiplied with this, and here I can use the limits of theta, that is from 0 to 0 to 2 pi, and here I can use the limits of r. So I have to replace dr here, d theta, and here the limits of r from b to a. Now if you integrate this, that will be r to the power 4 by 4, so a to the power 4 minus b to the power 4 divided by 4, and then multiplied with what you have to do here, you have to just multiply and divide by 4, I think, right? Then it will be 1 upon 4 and 0 to 2 pi and 2 sine theta cos theta whole square. That gives you sine 2 theta whole square d theta, and this is achieved by multiplying and dividing by 4. I have skipped one step. I hope you understood this. Sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta. That is the formula you use here. So a to the power 4 minus b to the power 4 divided by 16, right? And this is 0 to 2 pi, and you have to use a formula here, 1 minus cos 4 theta divided by 2. This is the trigonometric formula, right? And then comes the integration. Let me take this 2 here. That gives you 32. So a to the power 4 minus b to the power 4 times divided by 32, and then you integrate this like this. The integration of 1 is theta, and then you put limits to 2 pi, and integration of cos 4 theta within the range of 0 to 2 pi will be 0. I hope you know the reason. I have told you that if here you have cos k theta and the limits are 2 pi by k, or you can say that this is a periodic function. Its period is 2 pi upon 4, right? And you are integrating that function with a multiple of that period, then the answer will be 0, or you can observe it directly. If you integrate this cos 4 theta, you'll be getting sine 4 theta upon 4, and then on plugging limits, you will be getting 0, right? So of course, you can use the direct property, right? So 2 pi will be the final value, and the answer will be a to the power 4 minus b to the power 4 upon 16, and here you'll be having pi. So this is the final answer, right? Question number 2. Evaluate double integral over the region R, and the function is f4 times xy upon x square plus y square. You can see that this is also a symmetrical kind of function, and here you are having e to the power minus x square minus y square dx dy, where the region R is the set of points on xy plane, right? Such that x square plus y square minus x is always less than equal to 0. You just observe that this is nothing but the interior of some circle, because the standard equation of a circle is x square plus y square plus ax plus by plus c is equal to 0, or I think x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the standard equation of a circle, general equation of a circle, right? With the center minus g comma minus f, and radius is equal to square root of g square plus f square minus c, right? You have done it in +2. And x greater than equal to 0, y is also greater than or equal to 0, so it represents actually the first quadrant. This means that you are working in first quadrant. X is positive and y is also positive, so that is possible in only first quadrant, right? And here is some part of circle, interior of a circle. I will draw that circle, right? Okay, now solution. And again, you observe that this function is symmetrical in x and y.
This function is difficult to integrate with respect to x as well as with respect to y. Nobody can integrate this function with respect to x first or with respect to y first due to the presence of this complicated function. If it is not here, then I hope that you can evaluate it by assuming y square equal to t, that is integrable. But due to the presence of this complicated exponential function, the integration is become difficult, right? So we have to use those polar coordinates. And of course, x square plus y square, whenever you see x square plus y square, there's always a good chance that this method will fit, because x square plus y square equal to r square, right? Okay, so first we'll convert this circle into polar form, because nobody can directly tell the equation of this circle in polar form. This is the equation in Cartesian form. You want to convert it into polar form by using the substitution. Let x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Please note that these are the standard substitution, which are always same for all of them, right? And then of course you will be replacing dx dy by Jacobian determinant dr d theta, and that gives you r dr d theta, right? And now the circle which is actually given in Cartesian plane, right? You are going to take that circle in r theta plane. I am not using the symbol of less than or equal to. I am just using the equal to, because I want to express this circle into a circle on r theta plane. So I'm not using that inequality sign, right? Okay. Now see, if you put x equal to r cos theta, then r square cos square and y is equal to r sin theta. That gives you like this from these two, right? Okay, so minus x is r cos theta is equal to 0, right? And now you can see that this will be r square minus r cos theta is equal to 0. Now a very important point is going to appear now. Gaurav Kumar, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you can see that I am having two factor, this factor and this factor. The product of two factors is 0. It means that any of them can be 0. Either r will be 0 or r minus cos theta will be 0. What do you think is the correct choice? What do you think Sir, that r is minus cos correct theta is choice? equal to 0. Why not r equal to 0? Can't r be 0? सर वहां पर सर r कुछ ना कुछ आएगा सर सर्कल का, तो सर r 0 हो नहीं सकता सर. हाँ, ऑफ कोर्स r 0 हो ही नहीं सकता. r अगर 0 हो जाएगा तो रेडियस ही नहीं होगी, रेडियस ही नहीं होगी तो फिर सर्कल कैसे बनेगा, राइट? तो r माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप जानते हैं कि जो r होता है वो डिस्टेंस होता है, वो 0 नहीं होता है. पर्टिकुलरली फिक्स नहीं कर सकते आप इसको. r एक वेरिएबल होता है. हाँ, वो 0 से लेके, अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में r जो था वो b से a था. हो सकता है किसी क्वेश्चन में r 0 से 1 हो, लेकिन r एक फिक्स नंबर हो ऐसा नहीं हो सकता. रेडियस बदलती चली जानी चाहिए, राइट? तो r minus cos theta equal to 0. तो आप कह सकते हैं कि circle is r equal to cos theta. Now how many of you remember that this is again a circle? This is a circle touching y-axis or x-axis? No, sorry, touching the horizontal axis or vertical axis? सर कितने लोगों को याद वर्टिकल एक्सिस को टच करी होती है? जो मैं बना लेता हूँ इसको. चलिए हम बनाते हैं पिक्चर. ये है आपकी y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x-axis, right? Not x-axis, sorry. we have left xy plane. We are now into r theta plane. So theta equal to 0 and theta equal to pi by 2, right? Forget about x and y axis. Now I'm going to draw this circle. This is r cos theta, and this is actually a circle like this. Okay, and I will take this circle here, touching the vertical axis like this. Okay, not fine. Okay, so this is r equal to cos theta. So this is own, and of course they're talking about first quadrant, because you see that this is x greater than 0 and y greater than 0 is given here, right? So this circle should be taken in the first quadrant. Now you can see that the picture is completely lying in first quadrant, and this is the region r which is given in the problem, right?
Now we'll draw a strip inside this, and of course the strip is not horizontal, not vertical. You are dealing in r theta plane, so make a radial strip, right? So radial strip is a like a cone, right? Okay, and here you can give a few. Where is the base of the strip lying? Strip का base किसके ऊपर है? Tell me this point. 0 0 जीरो जीरो नहीं, जीरो जीरो भूल जाइए। r इक्वल टू जीरो, जीरो कॉमा जीरो तो एक्स वाई प्लेन में हुआ था, या तो r थीटा प्लेन में है, सिर्फ r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ टेल मी द वेयर द हेड ऑफ द स्ट्रिप इज lying. r इक्वल टू व्हाट? See the circle. Yes, the head of the strip will always be below the circle, and the equation of circle is this one. Forget this equation. This was the equation in xy plane. Now you are in r theta plane, so write everything in r theta. Are you getting this point? Yes or no? Yes, sir. Now tell me the limits of r and theta. Limits of r have been shown in picture, but limits of theta, you have to tell me limits of theta. Please tell me the limits of theta. If you want to trace that, sweep that yellow colored region, you are going to sweep away that yellow colored region, and you are using this strip. Imagine that you are sitting here with a LED laser light in your hand, right? And then you have to sweep out this complete area, yellow colored area. You will be projecting your torch in this direction, theta equal to 0, and you will be moving your torch this way, and till what angle you will rotate your torch? Please tell me. Sir, 0 से pi by 2. Very good. 0 to pi by 2. Is there any confusion? और मुझे लगा कि थोड़ा सा आप कहने में थोड़ा हिचकी भी कि पाई बाय 2 ही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप 90 के आपने कहा, आपने थीटा को पाई बाय 2 कहा, जरा थीटा को पाई बाय 2 पुट करना, इस सर्कल में कितना आ रहा है, कितना होता है cos 90? सर्कल के इक्वेशन में थीटा को 90 रखिए, r कितना आ रहा है? फिर 0 होगा ना सर? 0, हाँ बिल्कुल 0, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही है कि जब आपने ऊपर की तरफ देखा, when you see towards the sky, then the light of your torch just goes away. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टॉर्च है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और बिल्कुल सही है कि जब आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे r का कुछ वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो थीटा की लिमिट्स हैं वो 0 से पाई बाय 2 ही हैं। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि पाई बाय 2 क्यों है, तो कुछ और लग रहा है, तो प्लीज इस कंफ्यूजन को मैथमेटिकली भी चेक कर लें, ठीक है। नाउ टेल मी द न्यू इंटीग्रल्स, एंथनी। The outer limits are always reserved for what? Theta or r? Say Anthony. Sir, R, sir, R. Okay. The outer limits are for theta, inner are for r. Outer तो हमेशा theta की होती है। Now I'm going to substitute the value of x and y in the function, and in the denominator I'm using r square, and here is also e to the power minus r square, because that this cos square theta plus sin square theta will be 1, and the value of dx dy will be r dr and d theta. Now using these substitutions, we can see that I will be having r in the numerator, right, and 4 will appear outside. Rather I should write it here. 4 will appear outside, right, because it's a constant, and theta is equal to 0 to pi by 2, but unfortunately this time all the limits are not constant. This cos theta is not a constant, so we can't use the same shortcut trick as we used in last question, right? So I will be having e to the power minus r square times r and cos theta sin theta, right? And I can always yeah, if I combine them, then that will be sine 2 theta, right? If I use that 2 there, so I will just leave 1 2 inside, and 2 sin theta cos theta will be sine 2 theta d theta, right? Okay, and dr is also there. Sorry, I have to use the dr d theta. So I am going to integrate with respect to r first, but I forgot to write that limits of r. Actually, limits of r are 0 to cos theta r times e to the power
minus r square. And why I should write this 2 here actually, 2 here, yeah, okay. Now you can see that I have taken 2 with this r, and 2 is absorbed in this 2 sine theta cos theta. Okay, now I'm going to integrate this with respect to r first, since the inner limits are of r. So I have to assume that r square is equal to t, right? And that gives you 2r dr is equal to dt, and that changes the inner limits will be of t equal to 0, because the original limit of r is 0, but now r is replaced by t. So if you put 0 here, so 0 square is always 0, and the square of cos theta, that gives you t equal to cos square theta. So upper limit will be cos square theta, if I'm not wrong. Yes, okay. And inside bracket for this function especially, we'll be having e to the power minus t dt, and what is left now, sine 2 theta will be waiting outside d theta. I hope you got this logic. This is just the substitution I have used to evaluate the inner integral only, right? Now integrate this function with respect to t. That will be e to the power minus t multiplied with minus 1, and then you will be plugging those limits. Then that gives you 1 minus, okay, that gives you 1. Okay, you evaluated the complete answer, fine. 1 minus what, e to the power minus cos square theta, if I'm not wrong, and then multiplied with sine 2 theta d theta, and now the limits of theta are 0 to pi by 2, right? Okay, now I will just separate these two, 0 to pi by 2 and 1 multiplied with sine 2 theta, okay, sine 2 theta d theta minus 0 to pi by 2, or should I assume that, sorry, I could have assumed p square, cos square theta is equal to p, yeah. If I take cos square theta is equal to p, because differentiation will be okay, fine, minus cos square theta. So let p is equal to minus cos square theta, because I can see that the differentiation of this is sine 2 theta d theta. Sonu Singh, yes, you want to say something? सर ये सेकंड स्टेप नहीं आया सर. कौन सा सेकंड वाला स्टेप नहीं आया? यस सर. ये वाला देखिए, यहाँ पे 4 था ना, 4 को 2 into 2 लिख दीजिए, ठीक है, एक 2 तो लगा दीजिए इसके साथ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो तो बन गया साइन 2 थीटा, और एक 2 को बाहर छोड़ दीजिए, तो मैंने भी बाहर छोड़ दिया, यही किया मैंने, और कुछ नहीं किया. सर वो आर, और कैंसिल, आर ये कैंसिल हुआ ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो एक आर तो बचेगा. अच्छा पीछे आर. ओके सर. हाँ ठीक है, तो ये देखिए जरा सही हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक सही है. तो देन आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू, क्या करने जा रहा हूँ मैं, 0, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स. सोनू सिंह न्यू लिमिट बताइएगा. ये जो लिमिट थी पुरानी वाली, ये थीटा की लिमिट थी, लेकिन अब तो आप थीटा की जगह p में जा रहे हैं, तो 0 डालिएगा, लोअर लिमिट cos 0 कितना होता है? सर 1 होता है, लेकिन -1 आएगा. -1, ठीक है, और cos 90 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस p हो जाएगा, और ये हो जाएगा dp. मुझे लगता है अब आपको ये आसान भी लग रहा होगा ये इवेल्युएट करने में. क्यों? इवेल्युएट 1 का इंटीग्रेशन हो गया p, और लिमिट जरेगी 0 -1 तो आएगा 1, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, और लिमिट डलेगी -1 से 0, e की पावर 0, कुछ गड़बड़ हो रही है, प्लस नहीं होना चाहिए क्या, माइनस. सर वो आपने e रेस्ट पावर माइनस p लिखा ऊपर, e रेस्ट पावर p होना चाहिए. ओ सॉरी तभी गलती हो रही है, p होना चाहिए, यहाँ पे भी p होना चाहिए, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा. अब ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, e की पावर 0 1, और ये कैंसिल हो जाएगा शायद, और e टू द पावर -1 इसका आंसर आ जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. एम आई राइट? इज इट फाइन? क्या ये ठीक है? नाउ वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. And this question is completely different from the last two, right? See, this is very important. Evaluate I equal to double integration, right? And limits are under root x minus x square, and the upper limit is under root of 1 minus x square.
and the inner outer limits are 0 to 1. You can understand that inner limits are of y and the outer limits are of x. You can observe this, but see the function. This function is looking symmetrical so far, and of course it is symmetrical. Dy dx, as you can see that the inner limits are of y and the outer limits are of x, so you have to evaluate this integral. Okay, now see, can you integrate this with respect to y first? Is it easy to integrate this function with respect to y or with respect to x? Is there any hope that change of order will work? क्या ये x के रिस्पेक्ट में आसान है इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में आसान है, या दोनों के रिस्पेक्ट में बराबर मुश्किल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको देखने से कि दोनों की रिस्पेक्ट में बिल्कुल बराबरी है, बिल्कुल मुश्किलें दोनों में बराबर होने वाली है, क्योंकि फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल है x और y में, आप देख सकते हैं, राइट? तो उम्मीद कुछ बची नहीं है, x और y को तो भूल जाइए, आपको xy प्लेन को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा r थीटा प्लेन में, और r थीटा प्लेन में जाने के लिए आपको x को रखना पड़ता है r cos थीटा, y को रखना पड़ता है r sin थीटा, और साथ साथ dx dy को रखना पड़ता है r dr d थीटा, जहाँ की r जो होता है वो जैकोबियन डिटर्मिनेंट की वजह से आता है, डिटेल्स अगर आप इसके देखें, राइट? क्या ये तो पहली बात हुई। पहले तो ये पता करिए कि क्योंकि यहाँ पे पिक्चर भी नहीं बनी है, रीजन इज नॉट गिवन, लिमिट से ही आपको सब कुछ करना है। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। y की लिमिट्स आपको नजर आ रही हैं, राइट? तो पहले मैं y की लोअर लिमिट पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंस y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये गिवन है। अगर आप इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, यू विल गेटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, and bringing them on the left hand side, you will be getting x square plus y square minus x equal to 0. Yes, it is a circle, और शायद ये तो वही वाला सर्कल है जो अभी हम कर रहे थे। अरे हाँ, ये तो वही वाला सर्कल है, इसका मतलब यही आएगा। I will copy the same calculation from here, right? We can always copy our own work. अपनी ही कॉपी से नकल मारने को नकल नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो समय बचाने के लिए हम ये पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पेस्ट। Okay, yes. Fine. This is our cos theta. So you have analyzed this lower limit. Now we are going to analyze this upper limit. This is ये आपको ध्यान रखिएगा ये सर्कल कैसे बनता है, right? And see the upper limit. Y is equal to, of course, these are the limits of y. So I'm writing y on the left hand side, right? Circle with radius 1, good. So if you square it, you're getting y square equal to 1 minus x square, and that is a simple circle, x square plus y square equal to 1. This is again the same circle, I think. No, sorry, but this is the simplest one. If you put here r cos theta, r square cos square theta plus r square sin square theta equal to 1, then you will be getting r square equal to 1. And on taking a square root, you will be writing r equal to plus minus 1, but you know that r is a radius, so you just ignore negative sign, right? Do not take negative sign for radius, right? So r equal to 1. Now we can easily draw this circle. Forget about the outer limits; they're not important. They just give you the idea about the motion of this strip, but we will consider them surely, right? Okay, right. Now, should I take these limits also, and those will give the limits of theta? Yes, of course, they are equally important, right? Now I'm considering the lower outer limit. Okay, they will give the actually the inner limits give you the limits of r. The outer limits will give you the limits of theta. This is that simple, right? Now, since I'm considering the lower outer limit, that is x is equal to 0, and in place of x you put r cos theta equal to 0. Now I will ask Mr. Krish Kandari if he is here. Either r is 0 or cos theta is 0. What should be 0? Krish Kandari. Yes sir. क्या होना चाहिए 0? r 0 होगा या cos theta 0 होगा? So cos theta can be 0. Okay, और cos theta कब होता है 0? कितने यानी कि ये आ गई आपकी लोअर लिमिट। देखिए लिमिट भी निकल गई अपने आप ही, लिमिट से लिमिट निकली, इनर से इनर लिमिट निकली, आउटर से आउटर निकलेंगे, राइट? चलिए एक और बच गई है, ऊपर वाली लिमिट x इक्वल टू 1 है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप सर थीटा 0 पे आएगा। अच्छा ऐसा क्यों आ जाएगा 0 पे? इतनी जल्दबाजी करो, r कहाँ छोड़ दिया आपने?
हाँ सर 1 है ना? आर कहाँ छूटी? अच्छा आर 1 है। हाँ आर तो 1 है, लेकिन आर तो cos थीटा भी है। नहीं आर 1 है, ये क्या हो रहा है? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा तो cos थीटा का वो करेंगे तो 1 पे आता है ना, 0 पे आता है। मतलब आर को 1 ले लें और नहीं cos, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि r1 है। हाँ आर तो 1 बाहर वाले सर्कल कर लेना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चलो हाँ ठीक है, किसी पे भी ले सकते हैं, दोनों के लिए थीटा सेम ही आएगा। ठीक है, तो आर को 1 ले लिया, cos थीटा cos थीटा इक्वल इज टू, इक्वल्स अच्छा आपको तो थीटा की लिमिट निकालनी है ना? ओके राइट, आपको यस थीटा की सर। लिमिट निकालनी है। फिर क्या? थीटा इक्वल टू, थीटा इज वैसे इक्वल्स एक टू चीज मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आप हो सकता है आर की वाली वैल्यू, कोई बच्चा कोई कहेगा कि ये क्यों डाल रहे हैं आर 1, आर को ये भी तो डाल सकते हैं, हाँ या ना? 0। यस यस और सर। नो? तो फिर वो क्या डालेगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा अगर वो आर को cos थीटा डालेगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। यस और नो? यस सर। लेकिन फिर क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। तो वहां से भी क्या मिलेगा? वहां से भी थीटा कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो चाहे आप इस वाले को अप्रोच करें या इस वाले को यूज करें, दोनों से एक ही चीज आ रही है, राइट? यस तो सर। फाइनली आपको थीटा 0 ही मिलेगा, तो एक लिमिट आपको ये भी मिल गई, राइट? चलिए पिक्चर बना लेते हैं, क्योंकि पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगी लिमिट। देखिएगा आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसका सुपर इजी है, बहुत ज्यादा इजी है इंटीग्रेशन इसका। इंटीग्रेशन इसका कुछ नहीं है। सी ये मैंने ड्रॉ करी है 2, ये है आपकी थीटा इक्वल टू 0, और जिसे आप y एक्सिस समझ रहे हैं, दरअसल ये थीटा इक्वल टू पाई/2 होती है, ये y एक्सिस नहीं होती है। चलिए पहले मैं ड्रॉ करूंगा आसान वाला सर्कल r इक्वल टू 1, ऐसा रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है 1। तो कुछ ऐसा होता है, छोटा सा सर्कल 1 रेडियस का, और इसको उठा लेते हैं। ये लीजिए, अरे ये कहाँ पहुंच गया? सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया। हो now I'm picking this circle and placing it at the origin, right? This is r equal to 1, right? Now I will take the another circle r equal to cos theta, and r equal to cos theta is also a circle, but touching the vertical line, right? Okay, लेकिन ये इसके अंदर आएगा या बाहर आएगा, क्वेश्चन ये है। We'll tell this. अंदर ही अंदर रहेगा आना सर। हाँ अंदर आना चाहिए ना सर। नहीं, अंदर नहीं आएगा। पहले मैं r इक्वल टू cos थीटा वाले बनाता हूँ। इसकी रेडियस कितनी होगी? अच्छा ये बताओ, ये इसका रेडियस कितनी होगी सर्कल की? वो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी रेडियस बताइए इस सर्कल की। इस सर्कल की रेडियस बताने के लिए इसकी रेडियस बता दो, कितनी रेडियस आएगी इसकी? हाफ? यस और नो? हाफ आएगी ना? ठीक है, हाफ आएगी। तो ये यहाँ पे होगा हाफ, तो ये हाफ है, तो ये पॉइंट होगा, ये टोटल 1 होगा, ये डिस्टेंस होगा 1, राइट? अच्छा, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। तो यानी कि जो दूसरा वाला सर्कल है वो दरअसल इसके बाहर ऐसे जाएगा, ऐसे। ये होगा पिक्चर, बल्कि अच्छा बना नहीं बिल्कुल, उसको अलग से बनाते हैं। क्या आप समझे कौन अंदर आएगा और कौन बाहर आएगा? ये पिक्चर बनेगा इसका, राइट? डू नो दैट दिस आउटर सर्कल इज r इक्वल टू 1। जो ये वाला सर्कल है, दिस इज r इक्वल टू 1, एंड इनर सर्कल इज r इक्वल टू cos थीटा। क्या आपको ये समझ में आया है, हाँ या ना? कौन सा बाहर कौन सा अंदर है, वो रेडियस के हिसाब से। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आल्सो यूज दिस ओरिजिनल इक्वेशंस टू फाइंड आउट देयर रेडियस। यस और नो? तो इससे साफ है कि जो r इक्वल टू cos थीटा है वो अंदर वाला है और r इक्वल टू 1 बाहर वाला है। नाउ प्लीज सी द एंगल। थीटा कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90 तक है। इसका मतलब सिर्फ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करना है आपको? सो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस वन एक्चुअली, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप सॉरी ये वाला देखें, या इसके बाहर और इसके अंदर, राइट? क्योंकि स्ट्रिप आपको ऐसे बनानी है, स्ट्रिप का बेस इसके ऊपर होगा, हेड इसके नीचे होगा, इसका ये तो मतलब होता है, राइट? तो स्ट्रिप का बेस इसके ऊपर, हेड इसके नीचे, तो फिर येलो वाला यही रीजन आएगा कि इसको मत शेड कर देना। नहीं, यस लिमिट्स सर। बताइए और थीटा की लिमिट बताइए, जब तक मैं पिक्चर पूरा करता हूँ, बोलते रहिए। थीटा सर 0 से पाई/2।
और सर R और ये बेस किसके ऊपर है स्ट्रिप का? ये वाला कौन सा सर्कल है? ये छोटा छोटा cos थीटा, और ये बाहर वाला है r इक्वल टू 1। ठीक है, यस और नो? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सर्कल अंदर वाला कौन सा है, बाहर वाला, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना तुम्हें? सच कहो। हाँ सर वो सर्कल वाले स्क्वायर में प्लस थोड़ा वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये सबको पता होना चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, राइट? इसका सेंटर होता है c माइनस g कॉमा माइनस f, राइट? और इसका रेडियस होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। याद रखनी पड़ेगी पुरानी चीजें, भूलनी नहीं है, पुरानी चीजें सब याद रखनी है। 1/4 का मल्टीप्लाई आपने इधर किया और दैट बिकम्स sin 2 थीटा, या सो 2r e टू द पावर माइनस r स्क्वायर sin 2 थीटा, और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा dr d थीटा। On substitution of the values of x and r, you will get this, and of course you have to multiply and divide by 4, और तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। तो ये पुराने क्वेश्चन की तरह ही है। I am writing the answer directly. On evaluation, the answer will be 1 minus 2 upon e. This will be the answer. You can check it, and of course this is same. This integral is same as the last one. See this integral, both are same. बिल्कुल same है दोनों के दोनों। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर लिख दिया मैंने इसका, right? I hope you got this. कोई प्रॉब्लम